So, Namaskar all of you. Are you able to hear my voice? Voice more clear ଅଛି ତ? ଶୁଭା ଯାଉଛି clearly? I guess Okay, fine. So, paper 3 ଟା ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରି complete କରିଦବା. ତାପରେ paper 1, 2 ଆଉ 4 1, 2 ର 1 ତ ଇଂଲିଶ ଟା ଛାଡନ୍ତୁ ମେନ୍ସ କଥା କହୁଛି. paper 2 ର ଯୋଉ ଅଲଗା କ୍ଲାसेस ଗୁଡା ହଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଏପିପି ବ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ସେଟା କରିପାରିବେ. ଯେମିତି କି ବିଏନଏସଏସ୍ କ୍ଲାସ ଟା ହଉଛି, ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଅଦର କ୍ଲାसेस ଯୋଉଗୁଡା ଆମର ସିଲାବସ ରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେ. ପେପର 3 ଟା ସେଟା ଏଇ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା, ରାତି 9ଟାରେ ଯୋଉଟା. ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ବଡ ପାର୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ ର, ସେଗୁଡା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେରିକା. ଓକେ, ତ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ 3-4ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ. ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ସିଲାବସ ଯୋଉ ସିଲାବସ କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ବ୍ୟାଚ୍ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେଇ ସିଲାବସ ଟା ହିଁ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ତାକୁ ରଖିଦେଲା. ଭାବୁଥିଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟନ କରିବ, ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି. ସୋ ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରପରଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ. ତ ତାର ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଇଁ ହେଲା 3, ଓକେ, that is paper 3 mains ର minor criminal laws. ଓକେ, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ ପାର୍ଟସ ଗୁଡା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଟଚ୍ ଛାଡି ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖିବେ. ଆପ ରେ ଏଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ. ଯୋଉଟା ତା ଭିତରୁ ଯେମିତି କି ଏଇଟା ନମ୍ବର 6 ଓଡିଶା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସପ୍ଲାଇ ଲାଇନ ମେଟେରିଆଲ ଅନଲଫୁଲ ପୋଜିସନ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକ୍ଟ ଗୁଡା. ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପାର୍ଟଟା. ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିଠୁ. ଓଡିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1972, ଆର ପାଖାପାଖି 91 ଟା ସେକ୍ସନ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟେକ୍ନିକାଲ ବି ଅଛି. ଓକେ, ତାପରେ ଓଡିଶା ଟିମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ଟ୍ରାንଜିଟ ରୁଲ୍ସ ଟା ଏଇଟା. ତାପରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଆକ୍ଟ ଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହବ. ଓକେ, ଆଇଟି ଆକ୍ଟ, ଇମୋରାଲ ଟ୍ରାଫିକ ଆକ୍ଟ, ତାପରେ ଜୁବିନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଓକେ, motor vehicle act, ଏଇଟା ବାକି. ଓକେ, so those parts we have to see. एपीपी ପାଇଁ 16 ଟା ହିଁ ଅଛି, ଏଇ 16ଟା. ଓକେ, ଏଥର ଛୋଟ ଛୋଟ ବି ଅଛି ଆମର. ଏନିୱେ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା these things we have completed. We are now here. ଓକେ, ତ ଆର ଟିକେ ଖାଲି ନୋଟ୍ସ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଦେଖିବେ. ଫର୍ଷ୍ଟ ନୋଟ ଟା ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଗ୍ରୁପ ରେ, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଆପ ରେ ମିଳିବ. ତାର ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଦେଖିବେ. ଇଚ୍ ନୋଟ୍ସ ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଡିଟେଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ମଟେରିଆଲ ଘରିକା, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେମିତି ଡେଫିନେସନ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ ରିପିଲ ବି ହେଇଯାଇଛି. ଆମର ଏତେ ଜିନିଷ ତାର ବ୍ୟାର ଆକ୍ଟ ର ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ନ ଯାଇକି ଆମର ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ. ନୋଟ୍ସ ଟା ବହୁତ ଏକ୍ସହାଉଷ୍ଟିଭ ଅଛି, ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ସେଟା ମୁଁ କହିଦେବି. ତାପରେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଆଉ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସେସ୍ ଆମକୁ କମ ମିଳିବ. ଓକେ, ଯେମିତି କି ହେଲା ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପଢିବୁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-10ଟା ସେକ୍ସନ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନେବି. ଓକେ, ତ ମେ ବି ଆଉ ଯେହେତୁ 1 ଆୱାର ର କ୍ଲାସ ରହିବ, ତେଣୁ ସବୁଗୁଡା ବି ଇମିଡିଏଟଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବାଟା. ଓକେ, ସୋ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଲାଇକ୍, ଏଇଟା 91 ସେକ୍ସନ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଲାଗିଯିବ ଆମକୁ 9-10ଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିଯିବ. ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ସବୁ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ 2ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଦେବି ମେନ୍ ର, ତାର ମଡେଲ ଆନ୍ସର ବି ଥିବ. ଯେମିତି କି ଆଜିର ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଅଛି, ଏଇଟା ମତେ 2ଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ ସାରିବା ପାଇଁ, ସେକ୍ସନ 1 ଟୁ ସେକ୍ସନ 10. ଓକେ, ତ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ସେକ୍ସନ 1 ଟୁ 10 ଭିତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ. Definition of forest produce under section 2G of Odisha Forest Act is partly source independent and partly source dependent. Okay, explain the statement with help of relevant judicial decision. आर important case laws गुड़ा भी अच्छी, सेटा भी टिके टिके आपको देखिया में पड़ियो. ओके, कहीं ना आर पैटर्न ऑफ एग्जाम हमें जानू, ये कौन 5 मार्क क्वेश्चन पकेबे, 10 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन पड़िबो,
ଯେମିତି କି ଓଡିଶା ସୁପିରିयर जुडिशियल सर्विस रे पडुची ना एगुडा ओजेएस भलिया 25 मार्क क्वेश्चन पड़िबो 15 मार्क क्वेश्चन पड़िबो 10 मार्क वी डोंट नो ओके तो हमको 2 मार्क पे प्रिपेयर हो पड़ियो 25 मार्क पे प्रिपेयर हो पड़ियो 25 मार्क पे पड़िबन जेटू 16 टा स्टैट्यूट्स अछि एगुडा पूरा तो एगुडा यदि मन रखा पे डिफिकल्ट होची सब ईयर रे आपण माइंड मैप रहिची ओके तो से माइंड मैप टा भी टिके पढ़ी देले 2 मिनिट रे पूरा इंटर 10 पेज पढ़िया जा माइंड मैप टा पढ़दा से कने सब जिंस सेही गुडा ही आपण माइंड मैप रे थिबो ओके सेति की भी मन रख देले जने लेखि के 30-40% नै आसीबो ठीक अछि तो सेटा भी देखिबे आउ जो हिसाब रे आंसर लिखाई छी पॉइंट वाइज से हिसाब रे प्रैक्टिस करिवे ना पैराग्राफ रे मार्क लिखिले मार्क्स मिलुनी तेनु आमे जो हिसाब रे मार्क मिलछ हमको सेटा लिखिबार अछि राइट सो से जो ए टाइप रो जंती ओके जंती कि सेक्शन 3 to 10 ओके रिजर्व फॉरेस्ट ऊपर अछि देखिबा सेटा एटा कंप्लीटली गोटे डायग्राम रे आपनकर कवर हेकी अछि बुझिपाले तो जदि आपनको समय मिलुनी पूराटा को भी पढ़िया पई ताको देखिदेले भी बहुत गुडे जिंस आपण जानि परिबे ओके सो लेट अस कम देन लेट अस स्टार्ट सेक्शन सर 1 to एग्जाम 10 में केबे नोटिफाई करे एग्जाम टाइम अच्छी एबे तो सिलेबस टा रेडी हैला एबे आपनकर एते डेरी काहे के हैला वर्ष लागला आपनकर से सिलेबस ऊपर किछि इश्यूज थिला बहुत गुडे स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन करथिले कि से सिलेबस टा चेंज करा जाऊ किंबा जो नुवा सिलेबस टा करा हिची सेटा एई वर्ष न इंप्लीमेंट करिकि किछि बोले नेक्स्ट ईयर कि नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम हो इंप्लीमेंट करा जाऊ याना बहुत पिला पुराना पैटर्न रे रेडी हेकी थिले सेटा गवर्नमेंट सुनिले भी समस्त कथा मीटिंग्स भी बहुत हैला वर्ष लागला से पई किंतु फाइनली जहा कमिटी रेकमेंड कला से माने एग्जैक्टली सेया ही तांकर ओके रेकमेंड करि देले दैट मींस हमरो एई सिलेबस टा एक्चुअली ओजे सिलेबस भी बड़ होयला एटा भी गोटे जिंस हमको देखिया पे पड़िबो एग्जाम केबे होबो अर्लीएस्ट मु कहूची ओके अर्लीएस्ट अक्टोबर आड़ू को हेई पारे ओके धरंतु अगस्त रे जदी नोटिफिकेशन बाहरला मासे दबो पके पे फॉर्म दैट इज लाइक धरंतु सेप्टेम्बर ओके तेणु सेप्टेम्बर रे हेले से अक्टोबर और लेटर आपण परीक्षा ताटू बहुत डेरी भी हेबे नॉट बिफोर अक्टोबर प्रीलिम्स टा कुछ आउ एपीपी रो मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है प्रीलिम्स एटा माइंड करके चलंतु आई होप ऑल ऑफ यू जो जो पार्ट्स उडा हमर कंप्लीट हे जेतला जेमति कि बीएसए रो ओके जो क्वेश्चन उडा थिला 1700 क्वेश्चंस बीएनएस रो भी ओके 200 प्लस सेक्शंस 10 क्वेश्चन इच सेक्शन सेटा आपण ऑलरेडी कंप्लीट कर देथिबे काहे कि ना सेटा ही से जो तीनटा ओल्ड लॉज और न्यू लॉज तारी ऊपर मार्किंग हबो और मार्किंग कट ऑफ जेतु डायनामिक कट ऑफ थिबो बहुत हाई जिवो ओके सो सेटा टिके माइंड रखिबार अछि नॉट बिफोर अक्टोबर माने सिंपल ये रे कहया गले अक्टोबर आगुरु प्रीलिम्स हबा डिफिकल्ट एबे केबे नोटिफिकेशन बाहरुची देखिबा बाहरी जिवो एबे जेतु सिलेबस एपीपी रो आउ किछि इश्यू नथला ओजेएसएम के अलग इश्यूज अछि एपीपी रो सेमति किछि इश्यू नथला एथरे 2 वर्ष रो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस बॉयस अभी आपनकर बढ़ी जाइछि जो माने जनरल मेल 47 माने जहा अलग सर्विस में करा हे जाइछि सेगुडा सब एथरे भी रहउछि ओके तो सेटा जस्ट खाली नोटिफिकेशन आसले हमरो जानिबे आउ किछि नै तो नोटिफिकेशन आसीबे आउ किछि एबे प्रॉब्लम नै ऑलरेडी पोस्ट तो नोटिफाई हे जाइथिला एतिकिटा पोस्ट अछि बोली ओके तेणु सेतरे एबे आउ किछि प्रॉब्लम हबनी बहुत जल्दी बाहर छ बहुत जल्दी माने एमति नो एई मास ही बाहर जिवो अगस्त धरंतु हला मासे देला आपन फॉर्म पके पे अक्टोबर अराउंड सेने प्रीलिम्स टा करिवो अक्टोबर और लेटर ठीक अछि काहे कि ना देन अगेन आउ गोटे इश्यू भी रहइबो से खाता करेक्शन रो मेंस रो खाता करेक्शन रो काहे ना जो सब्जेक्ट उडा अछि सेगुडा कोनोसी यूनिवर्सिटी रे हरि करे पढा हुएनी ताको जे पुनी करेक्शन करिवे सेमति पुनी अगेन ओपीएससी के आगुरु सेटा देखिया पड़ियो ओके एनीवे आमे आम जिनसटा है कि आमे केते जल्दी पेपर 3 टा सार दबा तापरे पेपर 4 रो जोटा आपनकर अछि कोन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स ओके सेही पार्ट टाको टिके भलरे देखिया पड़ियो थियोरेटिकल पूरा तेणु सेटा टिके देखिया पड़ियो लेट अस स्टार्ट देन सो अच्छा ए जो ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट 1972 ता आगुर जदी एक्ट थिबो ओके अपन देखिबे ओडिशा रे एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस एरा रे ओडिशा रे
दी तीनटा स्टेट रो अलग अलग डिविजन्स थिला फॉर एग्जांपल किछि पार्ट हमर मद्रास प्रेसिडेंसी रे जाउतिला प्राय पार्ट हमर बेंगल प्रेसिडेंसी रे जाउतिला आउ किछि एमिति ट्रैक्स भी थिला जोड़ा कि सेतेबेले जो सीपी थिला ओके सीपी हला आपनकर सेंट्रल प्रोविंसेस करिके तार भी किछि पार्ट्स थिला ठीक अछि तेनु जेतेबेले इंडिपेंडेंस हला ओके 1960s अराउंड गोटे इश्यू देखा गला फॉरेस्ट रे कि विभिन्न डिस्ट्रिक्ट गुड़ा अलग अलग लॉज रे फॉरेस्ट लॉज रे चलुछ किछिटा डिस्ट्रिक्ट्स रे ओके मद्रास फॉरेस्ट एक्ट चलतिला 1882 रो आउ किछिटा ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चलतिला 1972 रो बाय दैट टाइम माने बाय द टाइम ऑफ 1965 70 72 अलगा केतेटा नुआ स्टेट जो माने सब हेतिले से माने तांको निजो स्टेट पे अलग अलग फॉरेस्ट एक्ट बने दिथिले तेणु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा भी डिसाइड कले कि आमे हमर निजर बनेबू निजर एक्ट बनेबू सो दैट ए जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स होची गोटिए पॉलिटिकल बाउंड्री भितरे दैट इज द स्टेट ऑफ ओडिशा सेही जिंसटा केमती चेंज हबो ओके तेणु पूरा ओडिशा भितरे गोटिए लॉ केमती लागू हबो दैट वाज द प्राइमरी एम आपण कहि परिबे दैट वाज द प्राइमरी एम ओके सो these are certain things which you have to keep in mind right so जो आमर बेयर एक्ट अच्छी ओके सेथरे ता हिस्ट्रीटा देछि हमर किछु दरकार नहीं किंतु काहे कि एटा हला ऑब्जेक्टिव टे जानिया पे टिके पडू पढिया पड़बे एटी जिन देछि से as of now माने 72 को देखौछि there are two forest act 2 TO हो जाइछि TWO in application in state of Odisha that's the Indian Forest Act 1927 and the Madras Forest Act except for the district of Koraput Ganjam and part of Fulbani it is undivided hela Baliguda and G Udagiri taluks where the Madras Forest Act in force the rest of the area is covered by Indian Forest Act ए problem टा होउतिला तांगर तेणु सेटा गोटे एक्ट को ओके यदि गोटे एक्ट पूरा ओडिशा ऊपर लागू होबो सेटा मेन emphasis thila okay so come to the introduction Odisha Forest Act 1972 was enacted to consolidate and amend the laws relating to protection and management of forests in Odisha it replaced the earlier dual system under the Indian Forest Act 1927 and Madras Forest Act 1882 with a specified state legislation au bhi alaga states seda by that time corsar thile okay section 102 egoda preliminary provisions section 3 to 10 establish the initial procedure for constitution of reserve forests and settling the rights of persons affected by such reservation so section 1 short extent title and commencement mains by important no just thare thare khali padi da eta the prelims re emti question pade kebe asthila force re seta ethi apanakar darkar nahi the legislation is called Odisha Forest Act 1972 it extends to whole of state of Odisha it came into force immediately okay kebe tar date sura dechi president assent dele 29 June 1972 re au Odisha Gazette re 14 July 1972 re publish hela okay the act is a state law applicable throughout Odisha the act applies to forest so eta application tar ठीक है तो स्कोप टा को जगह रे एक्ट टा अप्लाई होची फॉरेस्ट रे अप्लाई होची फॉरेस्ट प्रोड्यूस रे अप्लाई सो डेफिनेशन देखिबा फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज रे अप्लाइड होची falling within its territorial operation okay means territorial operation of the state older judicial decisions and statutory documents may use the expression Odisha eta jo Odisha जगह रे Odisha यूज करा आइची किंतु एटा जोडा सब अपडेटेड अछि एथरे अपन देखिबे सबुतरे ओडिशा हे जाइची okay Odisha Act of 14 of 1972 ठीक है सर section 1 is primarily a formal provision it does not create any substantive right offense or liability तापरे important asila section 2 that is definition first है cattle रा बहुत wide definition cattle रा देछि okay तो सर किए किए इंक्लूडेड होचंती कैटल रे आपण पछरे कैटल रो डेफिनेशन कोन दा दरकार
तो बहुत गुड़े जिन अच्छे ओनरशिप हो गला ट्रेसपासिंग हो गला कैटल आउ को जगह जाई ग्रेज करबा स्टार्ट कर देला तो कैटल की काहा को कैटल को आई पारिबो सो काउस बुल्स ऑक्सन एंड काव्स नंबर 1 एलिफेंट्स एंड कैमल्स तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट रे से माने भी आपन को मिलिबो ओके कैमलिटी न मिल पारे एलिफेंट तो मिलिबो बफेलोज एंड हॉर्सेस ponies mules and asses pigs sheep goat and their young ones and any other animals notified by state government ओके तो ये सब कैटल कैटेगरी जाउछन तो काई की पूरा एक्सप्लिसिटली यही माने ही कैटल्स बोली फॉरेस्ट एक्ट रे कुहा गला ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट रे द डेफिनेशन इज मच वाइडर than the ordinary meaning of cattle. It is important in relation to grazing in reserve forests. Cattle trespass, damage caused to forest vegetation, seizure and impounding of animals, and liability of persons permitting animals to enter forest land. So, यही गुड़ा को ascertain करिया पई ओके एते बड़ आउ exhaustive definition ता दरकार होछ. The state government can enlarge this definition through a notification. तापर next very important forest offense कहीं ना offense ता हेले भी तापर तारो punishment जहाँ prescribe है कि सेटा अपना देखिए. Okay, so forest offense section 2E forest offense means offense punishable under this act. Offense punishable under the rules made under this act. So it a forest act भी तारो under rules भी होची. And abatement of a forest offense. ठीक है कि फॉरेस्ट वेजिटेशन मु निजे खाइनी किंतु मोर 10टा गाय की ओके फॉरेस्ट भीतर मु पठै दी एबेट करछि तपे फॉरेस्ट ऑफेंस पे ठीक है एसेंशियल फीचर्स कोन एन एक्ट need not be prohibited directly by the act violation of a valid rule may also constitute a forest offense okay जेमति कि मु कहली कि मु एनिमल्स मानकु एनकरेज कली तुमे जाओ रिजर्व फॉरेस्ट जाइकी सेठी ग्रेजिंग करो ओके सो दैट वेजिटेशन करिके सेठी नष्ट होला अलगा भी प्रॉब्लम्स होला a person who intentionally assists instigates or facilitates the commission of a forest offense may be liable even though he does not personally remove or damage the forest produce ठीक है मु किछरा एनिमल्स को छाडी देली कि से माने है कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिस्ट्रॉय कले ठीक है तो बैम्बू खाइदेले किंबा से हमर जो ओके डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस अछि तेंदु लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देले ठीक है तो सेमति ताले मु तो निजे डिस्ट्रॉय करनी ना किंतु जो कैटल को मु ओन करथली त्या डेफिनेशन हमें देखलु कैटल रे ताको मु इंस्टिगेट करके छाडथली ओके सो ताले मु भी फॉरेस्ट ऑफेंस करू बिफोर सीजर और कॉन्फिस्केशन इज ऑर्डर्ड द अथॉरिटी मस्ट एस्टैब्लिश द एक्जिस्टेंस ऑफ ए फॉरेस्ट ऑफेंस अथॉरिटी को एटा एंश्योर करिया पड़िबो कि फॉरेस्ट ऑफेंस गोटे हेची ओके जदी से श्योर अछंती ताले ही जाईकी से पनिशमेंट आडू को कथाटा जीवो दैट ए फॉरेस्ट ऑफेंस शुड हैव बीन कमिटेड सेटा से श्योर हबार अछि ओके तापर फॉरेस्ट ऑफिसर वेरी इंपोर्टेंट कोन एटा अवश्य हम तो प्रीलिम्स रे पढियार नहीं एतरे किए फॉरेस्ट ऑफिसर नुह ठीक है तो जो फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर ताकू छाड़ी कि ए माने सब फॉरेस्ट ऑफिसर हेबे जोटा एक्सप्लिसिटली आपन को डेफिनेशन रे दिया है ए फॉरेस्ट ऑफिसर इंक्लूड्स अ पर्सन अपॉइंटेड बाय हुम बाय द स्टेट गवर्नमेंट मेनली or an authorized officer to perform the functions under the article on the acts or its rule central government nahi है state government or an authorized officer ठीक है तो explicitly central government is not implicitly thai paribo authorized officer okay so PCCFG state ro principal chief conservator of forest additional principal chief conservator of forest chief conservator of forest deputy conservator or divisional forest officer working plan officer silviculturist assistant conservator of forest forest range officer deputy ranger and forester ये सबू फॉरेस्ट ऑफिसर्स अंडर रे जिबे आ जदी गवर्नमेंट चाहूची आ का को विषय ऐड कर परिबो द स्टेट गवर्नमेंट है ओनली द स्टेट गवर्नमेंट may also notify other persons to exercise the function of a forest officer ओके आउ एक्सक्लूजन कार रहउची एक्सक्लूसिवली किंबा क्लियरली एक्सप्लिसिटली ओके आपनकर गोटे ऑफिसर को एथरो एक्सक्लूड करा हिची स्टैट्यूट ताको एक्सक्लूड करउची के से
forest settlement officer. The definition expressly excludes the forest settlement officer. काहेंकि बाहर कराला? A forest officer represents forest administration and protection. A forest settlement officer adjudicates claims of a private persons. So the separation protects impartiality in forest settlement proceeding. The forest department may present objection before the forest settlement officer, but it cannot ordinarily act as the adjudicating authority in its own dispute. এই জায়গাটা ফরেস্ট জায়গা কি নুহ, ঠিক আছে, এই টাইপর ফরেস্ট সেটেলমেন্ট অফিসর সেটা ডিসাইড করবে। তেণু ফরেস্ট অফিসর ডেফিনেশন রে তাଙ୍କୁ ରଖା ହେଇନି। ओके, सेक्शन 2G टा बहुत ही इंपोर्टेंट। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिलु, जो थरे आपण देखिले कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को दीटा टाइप रे डिवाइड करा है। एई जो क्लासिफिकेशन टा, एई जो डिस्टिंक्शन टा आपण को प्रॉपर्ली मन रखिबार अछि। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशंस अंडर द एक्ट। The definition contains two distinct categories. Category 1, produce, that is forest produce irrespective of its sources. ता अर्थ कौन ना, ए प्रोड्यूस गुडा आपण जोठु भी आनंतु, इट इज फॉरेस्ट प्रोड्यूस। जदि मोर सिटी रे गोटे घर अछि, गोटे ऑर्चर्ड अछि, बड़ जगटे, मु सेठी गोटे ओके काठ सेटू काटी की टिम्बर आनुछ हैला भुवनेश्वर में, तथापि सेटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस सब इरेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। ठीक अछि तो तेणु मु चंदन गछ गोटे लगे बड़ हो गला, चंदन काठ काटली, ओके, तो सेटा देखिबा आगु से तो काटियाटा पॉसिबल न, सेटा भी टिम्बर हबो। ऑल्दो भुवनेश्वर रे लगी मो घर ऑर्चर्ड रे पछरे, किंतु सेटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस हबो इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स। सो द फॉलोइंग आइटम्स आर forest produce whether found in forest or brought from a forest or not. Okay, कौन सेटा? Timber, okay, charcoal, KTHU, wood oil, resin and natural varnish, bark, tushar cocoons, lac and gums, mahua flowers and mahua seed, kendu leaves, sandalwood, tamarind, hill broom, siali leaves and fibers, sal seeds, wildlife skins, tusks, horns, bones and other wildlife products, and other produce notified by government. So irrespective of their origin, से सतरे फॉरेस्ट भितरु आछि कि नहीं, ये हेले फॉरेस्ट प्रोड्यूस। आपण जोटु भी आनंतु, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस ही रहिबे। ओके, therefore proof that these articles originated from government forest is ordinarily, ताମାନେ एक्सेप्शंस अछि, देखिया कोन एक्सेप्शन, अननेसेसरी। तो किछि प्रूफ दरकार नहीं कि एटा ई जंगल रु आछि बोली, रास्ता रे काठ धरा हैला, ओके, तो ये हैला टिम्बर, टिम्बर हैला फॉरेस्ट प्रोड्यूस। से घरु आस्तो, जोटु आस्तो, नॉन फॉरेस्ट जगह भी आस्तो। Therefore proof of these articles originated from government forest is ordinarily unnecessary for treating them as forest produce, though their ownership and legality of the possession may still require proof. तो ये हैला जहार origin, ओके, जहार origin मैटर करेनी, सेटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज सच। किंतु सेकंड कैटेगरी हैला जहार origin मैटर करे, कि सेटा फॉरेस्ट रु जदी आस्तिबो ताले फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जदी फॉरेस्ट किंबा से रिलेटेड एरियाज रु आसी नथिबो ताले फॉरेस्ट प्रोड्यूस नो। ओके, so produce that becomes forest produce only when found in or okay or brought from a forest. Koguda, trees and their leaves, flowers, fruits and other parts, grass, creepers, reeds, moss and other plants, honey, wax and arrowroot, peat and surface soil, rocks, sands and minerals, limestone, laterite and mineral oils, and products of mines or quarries. For this article, forest origin is essential ingredient. Hello. So leading case law कोडा एटा एरा case law उडा केना मेंस लिखिबा, तो case law भी जानिबार अछि। ओके, स्टेट वर्सेस ओडिशा वर्सेस पीपी अग्रवाल। आरो प्रॉब्लम कोन, ए सब ये जो माइनर क्रिमिनल लॉज उडा दैछि, ओके, आरो बुक जदि आपण किनिबे पूरा बहुत बड़ बड़ बुक्स उडा, जोडा कि हमर 5-10 मार्क रो क्वेश्चन पडियो, 16 टा स्टैट्यूट दैछि, टोटल 150 मार्क, गोटे स्टैट्यूट रो 10 मार्क भी होनी जदि इक्वली पकेबे। ठीक अछि तो
10 मार्क रु कम होची अवश्य केते इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रु अधिक पड़िबो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रु अधिक पड़िबो आ केते एक्ट अछि जेतरो टिके अधिक पड़िबो एई एक्ट रु मे भी टिके कम पड़ी पारे वी डोंट नो ओके केमिति कोन पकेबे तेणु सेटा गोटे जिंस तेणु केस लॉ जोटा पछरे गोटे टेबल रे देइची कि सेक्शन 2 रो इंपोर्टेंट सेक्शन 3 रो इंपोर्टेंट एटा सेक्शन 4 रो इंपोर्टेंट एटा से टिके टिके मन रखिबे पूरा कोट कले बेटर मार्क्स मिलिबो आ एई थरे फिराक मन रखिया दरकार नै माने facts, issues, rules and regulations, applicability in the case, and conclusion or ଆପଣଙ୍କର decision ସେଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କେସ୍ ରେ କଣ କୁହା ହେଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନା ଏତେ ସମୟ ମିଳିବନି ଓକେ ସାଇଟେସନ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ just for cross checking okay just for cross checking facts କଣ ଥିଲା a vehicle carrying 438 pieces of green bamboo was seized and confiscation proceedings were initiated. The prosecution failed to establish that bamboo had been obtained from a forest. It was held that the Odisha High Court held that bamboo falls within the definition of tree. However, bamboo is covered by the secondary category of forest produce. Therefore, bamboo becomes forest produce only when it is found or brought from a forest. Okay, bamboo obtained from private land cannot be automatically be treated as forest produce. The finding of authorized officer based on conjecture and without proof of forest origin could not sustain confiscation. Transportation of bamboo from a forest without a valid transit permit may constitute a forest offense, but its forest origin must be established first. This case demonstrates that definition of tree cannot be read separately from source-based qualifications contained in 2G2. Okay. Tapare NV Gopalaswamy versus Assistant Conservator of Forest. The reported note records that firewood obtained from a forest is a forest produce. Jehetu forest ru established hoichi forest ru and its transportation is governed by the transit rules. Jota ame next padiba. Okay, timber transit rules. The decisive factor is forest origin. Okay, out a case with the Siali leaves case. The reported notes under the act indicate that Siali leaves are expressly included within section 2G. Their transportation may require a transit permit under Odisha timber and other forest produce transit rules 1980. The particular source, manner of cultivation and applicable exemptions must be examined before imposing liability. Okay. So, next important definition is owner. Okay, forest producer कि गोटे फॉरेस्ट रो ओनर किए प्राइवेट फॉरेस्ट भी अच्छी मोर गोटे बड़ एरिया अच्छी मुझे गछ लगेदेली ठीक अच्छे फॉरेस्ट भाया करदेली प्राइवेट फॉरेस्ट सो 2H रे देखंतु ओनर इन रिलेशन टू ए फॉरेस्ट इंक्लूड्स ए मॉर्टगेज इन पोजेशन ए लेजी एनी पर्सन हु हैज ए राइट टू पोजेस और एंजॉय द फॉरेस्ट तो आर इंपोर्टेंस कौन द डेफिनेशन इज इंक्लूसिव एंड नॉट कन्फाइंड टू द होल्डर ऑफ द एब्सोल्यूट टाइटल माने जे एंजॉय करूची टाइटल टा ताना नहीं मॉर्टगेज से ओके कि गोटे लीज रे नहीं छी बट से एंजॉय करची एंजॉयमेंट राइट्स ता पाकर अछि ओके ताले से भी डेफिनेशन रे इंक्लूडेड अछि a person having lawful possession or enjoyment may be entitled to receive notice file objections claim compensation apply for protection or management of the forest and challenge an adverse administrative action okay जदि से ओनर रे डेफिनेशन रे गला ताले तारा एडवांटेजेस किंबा तारा प्रिविलेजेस करिका कोन रहउछ ओके नेक्स्ट 2K that is river includes streams canals backwaters creeks and natural or artificial channels the definition enables the government to regulate the transportation of timber and forest produce to different water channels एगुडा कोन जदि आपण ज्योग्राफी पढी एठी हमर दरकार नै ये हला डिफरेंट साइज रो और डिफरेंट वे रे जो फॉर्म हेची ओके रिवर बॉडीज करिका किंबा वाटर बॉडीज करिका ठीक है स्ट्रीम्स कैनाल्स ओके बैकवाटर्स क्रीक्स नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल्स तापर आसला जो कथाटा कहउतली सैंडलवुड रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट आपनकर अछि कोन पोजीशन गोटे अछि वेरी कॉस्टली okay how it is treated in a different way so 2M re seta treat karaichi sandalwood means wood obtained from any part of a chandan tree and it includes the chips dust and the powder also
Thus, processed or fragmented sandalwood remains sandalwood for the purpose of the act. तापर timber ର definition कौन 2n रे timber includes fallen trees आपण गछ काटी देबे कहि तो कटि गला आउ timber नो नहीं fallen trees felled trees ओके डिफरेंस कौन fallen trees और felled trees भीतर fallen trees माने सेटा natural process से कौन पवन पवन होला बांगला felled trees माने कटाई की भंगाई ओके tree felling woods that have been cut up and swan woods the definitions are not limited to standing trees or commercial finished woods ओके ये सब टिम्बर भितर जाउची तापर ट्री 2o tree includes palm bamboo stumps brushwood and canes however merely because bamboo is included within tree does not mean that every bamboo growing on private land automatically becomes forest produce the source condition under 2G2 must also be satisfied okay तो एटा गला सेक्शन 2 जोथरे इंपोर्टेंट डेफिनेशंस करिका आमे देखिलु एबे सेक्शन 3 के आसंतु ओके जोटा कि हमरा सेकंड चैप्टर रे रहउची पावर टू रिजर्व फॉरेस्ट्स ओके आमे कहू एटा गोटे रिजर्व फॉरेस्ट गोटे फॉरेस्ट अछि ताकू रिजर्व करिवार पावर का पाखे रहउची सो द स्टेट गवर्नमेंट may constitute a reserved forest any land belonging to the government or any land over which government has proprietary rights. Such reservation must be made only in manner prescribed in succeeding provisions. तो गोटे फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट करिया पे कोन एसेंशियल कंडीशंस एटा इंपोर्टेंट ठीक अछि एटा इंपोर्टेंट मार्क करिवे एटा से क्वेश्चन रे भी दिया अछि अपन से क्वेश्चन टा बहुत लंबा अछि बट अगेन एज आई टोल्ड यू अपन को लंबा छोटो सब टाइप रो क्वेश्चंस रेडी करिया पे पड़ियो बिकॉज़ वी डोंट नो द पैटर्न ठीक अछि आ ओपीएससी तो जेमति से नुवा परीक्षा जतले करे कि नुवा पैटर्न रे जतले परीक्षा करे सी गोटे किछि गोटे मॉक टेस्ट की कोन तार किछि करेनी अलगा सब स्टेट्स अपन देखिबे नुआ परीक्षा केबे होउची तो से माने दे देबे एटा ए टाइप रो क्वेश्चन पड़ियो तो मन से जानला कि हटा अच्छा एमति मते प्रिपेयर करिवार अछि ओपीएससी रो किछि ओके अपन यदि मन पकेबे आगुरु एडीएल परीक्षा हला फर्स्ट टाइम पे असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ okay so no one knew what was the pattern and all mcq थिला ठीक ही अछि but then जो टाइप रो क्वेश्चंस पचले ओके तो सेगुडा किछ गोटे पैटर्न वाइज देखले गोटे पैटर्न तार आगुर दे देथिले पिलांग सुविधा हेतांता एटा तो रिटन फॉर्म तो 2 मार्क यदि पडिबो ताले मते अलगा प्रिपेयर करिया पडियो 25 मार्क यदि पडिबो ताले बहुत लिखिया पडियो ओके तो आपण दीटा को ही प्रिपेयर करिया पडियो देयर इज नो अदर ऑप्शन essential condition कौन before initiating reserve forest proceedings the government was established identity of the land से land टा पूरा तार चौहदी जोटा तार बाउंड्री जोटा तार पार्सल एनकैप्सुलेशन जोटा और सेटा कहा ना रे अछि ओके आरओआर सेटा देखि कि कहा गवर्नमेंट रो लैंड ना को प्राइवेट लोकर government ownership of proprietary rights over the land and compliance with statutory procedures under section 4 to 31 जोटा में पढ़ियो nature of section 3 कौन section 3 is the jurisdictional foundation of reserve forest proceedings very important एठी यदि भूलभाल हो गला ताले असुविधा को if the land is not government property and is not subject to government property rights the government cannot validly initiate reservation proceedings merely by issuing a notification okay तो कौन ततरे important case laws हमें देखिबा state of UP versus महंत अवैधनाथ ओके महंत अवैधनाथ किए गोरखपुर पीठर से महंत थिले हमर योगी आदित्यनाथ कर ओके से लिनेज रे ताको आगु राइट दिस केस कंसर्न द पैरेलल प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 कौन प्रिंसिपल लेट डाउन एथरे हितला द फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 3 मस्ट एग्जिस्ट बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 4 onwards can be initiated अपन होती एटा तो ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट ओडिशा फॉरेस्ट एक्ट यदि अपन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 देखिबे ऑलमोस्ट 75 to 80% पूरा सेउथरु नियाइछ आ ओडिशा रे जहा जहा चेंजेस करिया कथा सेगुडा हमें कर एगुडा प्रोविजनली सेम थिला उत्तर प्रदेश रे भी सेही जिंसडा लागू थिला सेथ पई ए केस लोटा हमें देखु ओरिजिनली इलाहाबाद हाई कोर्ट रो एटा ओके डिसीजन टा if the land does not fall within section 3 the subsequent inquiry and extinction of rights of proceedings are without jurisdiction failure to file a claim cannot extinguish the right of a person
that the land itself was not legally capable of being reserved under section 3. से लोक ओके जार प्राइवेट लैंड थिला आ गवर्नमेंट सेटा को सेई थरे नोटिफाई कर दोछि कि एटा रिजर्व फॉरेस्ट सी जदी कोर्ट को जाई भी पारनी ता माने एनो कि गवर्नमेंट राइट अछि से तरह लैंड को नोटिफाई कर दो रिजर्व फॉरेस्ट हिसाब ठीक अछि the principle is relevant to similarly worded section 3 of the Odisha Act तापर सेक्शन 4 को आसंतु नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट जो नोटिफिकेशन करिवो कि एई पार्सल ऑफ लैंड ता रिजर्व फॉरेस्ट तारो प्रोसेस कोन कोन तार इंग्रेडिएंट्स कोन देखिबो कोन हेले से नोटिफिकेशन ता करि हबनी एगुडा सब सेक्शन 4 रे आपण पाइबे so nature of the notification when the state government proposes to constitute land as a reserve forest it must issue a notification in the official gazette तले ingredients कोन notification रो निहाती भाबरे कोन रहबा कथा notification रे the notification must declare that the proposal to constitute the land as reserve forest specify as nearly as possible the situation and limits of the land and appoint a forest settlement officer okay जे की forest officer definition रो ताको बाहर रखाइतिला एई कारण पे मेनली to inquire into the existence nature and extent of rights or privileges claimed by any person से जदी forest officer definition रे नेबे ताले एबे तो बायस हे जिवो से तो forest officer जेतु सेई डोमेन रे आसी गले से ओके सेई पे ताको forest officer डोमेन रे रखा हैला ओके so description of boundaries so चौहदिटा अपन जो boundary टा केमिति describe करा हबो the boundaries may be described through readily identified features such as roads east रे ए road west रे ए road okay rivers bridges hills village boundaries or other known physical features जेमति आपण को पट्टा रे देखु जंती boundary टा देखा होची exactly same type exact mathematical or cadastral description is not always indispensable cadastral जोटा आपण maps रे आपण देखिबे law रे बेसिकली आपण जो माने forestry पिला थबे कि जे मैप मैपिंग करथिबे so cadastral सेटा mapping संगे related से term टा okay so but the description must be sufficiently clear to identify the affected lands appointment and independence of forest settlement officer the officer should ordinarily not hold a forest office rather than that of forest settlement officer the forest department must be represented in the inquiry by the DFO the divisional forest officer or an authorized officer not below the prescribed rank the forest settlement officer acts as an independent adjudicating authority while the forest department appears as an interested departmental party okay tapare notification ta preliminary a notification under section 4 expresses an intention and proposal to reserve the land initiates the settlement proceeding does not finally declare the land to be a reserve forest seta aste aste dekhiba kemti hobo does not by itself extinguish existing rights okay जे जदी सेटा प्राइवेट लोकर के किछि से क्लेम करूची तारा राइट्स उडा एक्सटिंग्विश हे जीवनी काहे कि ना सेक्शन 4 अंडर रे गवर्नमेंट फॉरेस्ट को रिजर्व करिया पे नोटिफिकेशन बाहर कले एटा प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन इज प्रिलिमिनरी इन नेचर must be followed by proclamation inquiry and settlement last part ता हैला settlement सेटा हेई सरला परे तापर आपण कहबे एटा रिजर्व फॉरेस्ट हैला जोडा कि आगु हमें देखिबे the final declaration is made under section 21 only after disposal of claims appeals and revisions तापर आपण कहि परिबे एई पार्ट ता आपणकर रिजर्व फॉरेस्ट हे गलो ओके बनवासी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश the case arose from reservation proceedings affecting a large number of Adivasi occupants under parallel provisions of Indian Forest Act. The Supreme Court kon kahle thare Supreme Court directed that proper demarcation of land covered by Section 4 notification, wide publication of notification in affected villages. The loko jani be se takar claims karibe na je loko jani hi na ki eta government notify kar de gote reserve forest ro eta se kon tar right ta kemti claim karibo to tar publication तार प्रॉपर अनाउंसमेंट सब करा कथा से लोक जो माने अफेक्टेड हेबे से माने जानिया कथा कि गवर्नमेंट एमती गोटे सेक्शन 4 अंडर रे नोटिफिकेशन देला देन सर्कुलेशन ऑफ नोटिसेस थ्रू ग्राम सभास एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंक्वायरी फैसिलिटीज क्लोज टू अफेक्टेड कम्युनिटीज यदि बहुत दूर रे आपण करिवे ताले से माने जाई परिबेनी सेठी ओके तो से माने कहबे ठीक अछि राइट टा पळेला परे फुणी जाई कि अलगा असुविधा हो ओके एक्सेप्टेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्लेम्स effective opportunity to persons in possession to establish their rights and protection against dispossession
before completion of settlement procedure. The decision shows that a vague paper notification is insufficient where affected persons cannot reasonably identify the land or exercise their right to claim. Okay. Tapare section 5 ke asantu. Bar to accrual of forest rights and bar of suits. Section 5 produces two major legal consequences. After publication of section 4 notification. One is freeze on creation of new rights. After section 4 notification, no new rights can be acquired over notified land except by succession under a written grant or contract made or on behalf of state government or through a person in whom the right was already vested on the date of notification. Okay, so ei manakar hi rights roi paribo और आगु जाई परिबो नले न्यू राइट्स आउ किछि एक्वायर हे परिबोनी जदी सेक्शन 4 नोटिफिकेशन आसी जाय. Thus the provision prevents the creation of artificial claims after the reservation process has commenced. Okay, लोकंगर एक्चुअली किछि से नवा दवार नाही किंतु नोटिफाई हे गला रिजर्व फॉरेस्ट पिछे आसी कहबे क्लेम करियो हां हमें सेट रहउतलु. ओके, तो सेगुडा एमती बंद हो. राइट. Prohibition on fresh clearing and construction. So no person can undertake fresh clearing माने गछ काटिबा सेठी forest को clear करिबा. Okay, breaking up of land, cultivation, construction of shed or construction of other structure. The cultivation भी अछि त माने farmer जदी सेठी agriculture करिया पे चाहिबो सेते section 4 notification आसीबो unless exceptions are given सी आउ सेठी चाष कर परिबो. एई जिंस किछि करियो except in accordance with rules made by state government. तो सेथरे हम देखिबा जो rules अछि से already से पके देछि seeds. ओके, रेडी अछि क्रॉप हार्वेस्टिंग पई तो सेतेबेले से सेटा कर परियो किंतु नेक्स्ट न्यू साइकिल टा कर परियो. ओके, नेक्स्ट important distinction, section 5 prohibits creation of new rights and activities. It does not automatically destroy rights existing before section 4 notification. Existing rights must be examined under sections 6 to 9. Okay, so seita ei joटा hame पढुछु ना, तो that is why we have the mind maps. ठीक है, से section okay 2G जोटा कि हमें देखिलु forest produce partly independent, source independent and partly source dependent. Okay, source independent जोटा से partly source independent मान से जोट भी आछे सेटा forest produce हो से forest रो आस्तो न आस्तो first part जोटा हमें देखिलु timber, charcoal, kindle leaves etc. Okay, source dependent तो थरे पढी देबे आपनकर बेयर एक्ट टेक्निकल लैंग्वेज देछि एई मटेरियल उडा एगुडा बेसिक लैंग्वेज देछि थरे पढी देले बस तापर मन रखिया पई यू कैन यूज द माइंड मैप्स. ठीक अछि, माइंड मैप्स उडा बहुत इंपोर्टेंट एतरे जुडिशियल डिसीजंस उडा भी दिए दिछि तो जेति कि लेखिया दरकार से पांचटा डिसीजन देछि पांचटा कोन मु लेखि पारि परीक्षा रे एडी से तीनटा देछि से तीनटा भितरे गोटे लेखिले मोर काहे रे कोन बुझ पाले तो माने मु जानि थिला जिंसटा किछि तो लेखि देबी 10-15 मार्क तेणु माइंड मैप्स गुड़ा बहुत इंपोर्टेंट. ओके, जो जो मटेरियल रे माइंड मैप्स इंक्लूडेड रहउची सेटा टिके हॉल रे ताको देखिबे. ओके, नेक्स्ट कम टू बार ऑन टेम्पररी बार ऑन सिविल सूट्स. Between publication of section 4 notification and publication of final notification under section 21 आ मझी रे टेम्पररी बार रहइबा सिविल सूट्स ऊपर. A civil court cannot entertain a suit for establishing a right in or over the notified land except where the act otherwise provides. कौन पाई बात करी जाउछि बहुत जण पळेबे से टाइम रे जांगर एक्चुअली किछि सेमति क्लेम नै फ्रिवुलस क्लेम्स नै कि पळेबे एते गुडे केस हिगला को कोर्ट ओवरलोड हे जिवो आ तापरे नोटिफिकेशन डिले हे जिवो आपनकर फाइनल ताको रिजर्व फॉरेस्ट करिया. Reason for the forest settlement officer is the special statutory forum for deciding such claims. Parallel proceedings before civil courts and forest authorities are avoided. Conflicting decisions regarding the same land are prevented. Scope of the bar relates to suits seeking to establish land rights in or over land included in section 4 notification. Constitutional judicial review under 226 and 32 is not expressly excluded. Okay, fundamental rights, basic rights. Okay, तापरे केस लॉ जो देखिबा स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन. ओके, सुप्रीम कोर्ट केस सेटा 1996 रो. ठीक अछि, साइटेशन देखंतु.
The Supreme Court, while considering the parallel provision of the Indian Forest Act, held that the Act provides a complete machinery for investigation and settlement of rights. The forest settlement officer possesses civil code powers. So, underline. His decisions are subject to statutory appeal and revision. Once the final notification declaring the land as reserve forest is issued, the settled questions cannot ordinarily be reopened by consolidation authorities. The final notification binds other authorities in a manner comparable to a civil court decree. Okay. Finally, जो forest land settle होगला, आउ आपनकर जोटा कि section 4 रे जोटा initial notification आस्थिला जोटा final forest reserve होगला. Okay. तापरे जते आपनकर authorities अछंती semane it is just like a civil court decree. Okay. The case must be distinguished from preliminary section 4 stage. Conclusive finality follows the competent settlement process and final notification, not the mere proposal to reserve the land. Okay, so there are section 4 of 21 difference ta coach. Tapare section 6 ko asantu. Proclamation by forest settlement officer. After section 4 notification, the forest settlement officer must publish a proclamation in Odia in every town and village situated in the neighborhood of proposed forest. Okay, so that semane bhi janibe ki government eta ko gote reserve forest declare kariya pai jauchi. It must contents of the proclamation में कौन सी आदत है specify the situation and limits of the proposed forest. कोठी अच्छी तरह boundaries कौन होबो, को villages affected हेबे, all these things. Explain the legal consequences of reservation कि आपण को ए rights पड़ेबो, ए आया आपण को करि परिबेनी, चाष बास ता भीतर करि परिबेनी. For example, ठीक है, तार पुनी exceptions भी अच्छी. Fix a claim period of not less than 3 months. Require every claimant to submit a written notice or appear personally. Require disclosure of nature of claimed rights and require details of compensation claimed if any. Purpose कौन? The proclamation serves 4 purposes. First है notice दिया होची लोगों को. It informs affected residents about the proposal. ये जो pattern है लिखा है जी, subheading दिया है ला, तापर गोटे line रे explanation है. ऐटा एबे यही pattern रे हमको answer लिखते हैं राज. APP हो कि OJS means हो, okay, उसे paragraph form रे answer लिखिबे नहीं. Next, identification. It enables them to determine whether the land or customary use is affected. ये जिनसा हम आगुर करथलु, एबे एटा reserve forest हेला पर हमको करिया पे मिलिबन. It invites them to present their claims. It enables them to state the compensation sought if the right is surrendered, acquired or extinguished. हमें वर्ष वर्ष होला सेया करछु, एबे जतो हठात किने आपण हमको मना कर दोछंदी, ताले हमें नेगेटिवली अफेक्टेड हेछु, तनो हमको किछ compensation ताले दरकार. Okay, then form of claim. A claimant may submit a written notice or appear before the forest settlement officer and orally state the claim. Therefore, the Act does not make written pleadings the only permissible method. This is especially important for rural, tribal and forest dependent communities. Okay. लोकल एक ही जाननी. Okay, government भी के लोकल आंसर हेल्प करिया पे. तो से orally भी ऐसी कोई परियो. Okay, personally ऐसी कोई forest settlement officer सामने. What is the minimum period? The prescribed period cannot be less than 3 months. 3 months भीतर claims आपण तो दियंतु. The forest settlement officer may grant a longer period. ताको जब लागिला the remote जगह डाइट या अलगा problems अछि 3 months ऊपर दे परिया, but minimum 3 months. Shorter period would be contrary to the express statutory requirement. तो आरो जदि हमें देखिबा आज रा लास्ट सेक्शन टा, that is relevance of बनवासी सेवा आश्रम जोटा ऑलरेडी हमें देखथिलु. In the Banwasi Seva Ashram versus State of Uttar Pradesh, the Supreme Court emphasized that publication must be meaningful rather than mere formal. खाली गोटे statutory अछि तो बाहर कर दियो. Actually लोक जंती न जानंतु सेंती हेले it defeats the purpose. Demarcation, village level publicity and reasonable access to claim processes are necessary where tribal and forest dependent communities are affected. So 7, 8, 9, 10 tomorrow we will see. एथरे देखिबे after 10 तीनटा इंपोर्टेंट जिनस देछु हैला. फर्स्ट हैला कि आपनकर
को सेक्शन रो इंपोर्टेंट केस लो कोटा अछि सेक्शन 2 रो हम देखिलु स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस पीपी अग्रवाल ओके कोन थिला खाली प्रिंसिपल टा मन रखन ओके से गोपाल स्वामी वर्सेस असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट भी थिला 3 and 9 रे स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महंत अवैधनाथ ओके सेक्शन 8 मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी सेक्शन 4 6 और 7 बनवासी सेवा आश्रम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ओके द एटा टिके फाइंड रखे अछि तबर इंपोर्टेंट डेफिनेशन जोडा सेटा उतर दोछि ओके सो आ एटा हला जोडा तार मेंस क्वेश्चन प्रथमटा आपण कर परिबे सेटा हमें साइड दै छी द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस अंडर 2G of forest Odisha Forest Act 1972 is partly source independent and partly source dependent माने कोन से सोर्स इंडिपेंडेंट माने से जोटी भी धरा हो सेटा फॉरेस्ट रो आस्थाउ कि न थाउ सेटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस ओके से हिसाब रे नियाबो आउ पार्टली सोर्स डिपेंडेंट माने जदी फॉरेस्ट रो आसी प्रूव होउची ताले सेटा फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस एटा 500 रु 600 वर्ड भीतर 15 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन छुड़ा ठीक है तो एगुडा जानले हमें 2 मार्क रा लिखि परिबे ठीक है थरे ताको पढिबे बहुत सिंपल इंग्लिश लिखा है जेटा बुझिबार भी किछि प्रॉब्लम नहीं ओके तो एठी कोन ना प्रॉब्लम टा हला कि से बहुत गुडे केस लॉस देछि ता 1 2 3 तीनटा केस ला लिखि परिबे ना गोटे केस ला लिखि जोटा एक्चुअली लिखि हबो एटा आपनकर नॉलेज को बढ़ाया ठीक अछि आउ एटा भलरे एटा करिया भी सिखिबे यदि 10 15 मार्क क्वेश्चन हला वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस और इजियर डायग्राम ए डायग्राम रे एवरीथिंग इज कवर्ड सब जिंस कवर हिच ओके जहा जहा आंसर पचारते सब जिंस ये कवर कर देछि गोटे डायग्राम में राइट तो केबे केबे कोन होबो ना मिलिबनी हमन समय तेणु ये डायग्राम सोडा भी आपन हेल्प करि परिबो ओके क्वेश्चन 2 टा हम पढिनु सेटा हम काली पढले जाई करिया केना पूराटा देछि पूरा रिजर्व फॉरेस्ट नोटिफिकेशन द प्रोसेस टा डिस्कस द स्टैट्यूटरी प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट अंडर सेक्शन 3 to 10 of Odisha Forest Act. Explain how Act protects existing rights and deals with shifting cultivation with reference to relevant case. हला एटा 700 रु 800 बार 20 मार्क ठीक अछि तो आपण लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करन तो शॉर्ट टा सहज रे लिखिबे हला आ जदि शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करि जेति 25 मार्क क्वेश्चन पड़ला ताले असुविधा है ठीक अछि सो टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम सेक्शन 7 ओके जो माने क्वेश्चन 1 टा लिखिबे ताको लेखि कि मते पठे देबे ओके 9437002210 रे देखि कि भी लेखंतु किछ असुविधा नहीं ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट विद इन दैट टाइम से कहि जेडा केते 15 मिनिट रे लिखिया पे 15 मार्क रहला कोन हमर तो 15 150 मार्क 150 मिनिट तेनु 15 मार्क 15 मिनिट 2 मार्क 2 मिनिट से हिसाब रे प्रैक्टिस करी गोटे 15 मार्क क्वेश्चन देछि क्वेश्चन 1 टा सेटा आपण 15 मिनिट से सारी सीए लिखि छी बहुत सेटा 15 मिनिट रे लिखि होबनी आपण प्रथम ताको पढिबे ताकू पढ़ला परे क्वेश्चन रो जो डिमांड टा अछि ताकू मते 15 मिनिट रे मीट करिवार अछि बुझि परले तो आपण केते जानि जंदी सेटा पढि कि सेटा इंपोर्टेंट नो आपण को पचरा कोन हिची आपण लेखि केते कि पारे हैला सेटा को माइंड रखि सो टुमारो विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 7 ओके ता आगुरु आंसर टा लिखि कि पठांतु ओके जो माने टिके बसी जाइथिबे केबे बाहरी आतला कोनला एबे टिके आस्ते आस्ते एवरीडे वन आंसर गोटे आंसर ही लिखंतु ओके आउ प्रीलिम्स रो बहुत भलो रे सेटा जेते एमसीक्यू जो सोर्स रु आपण धरि परिबे तीनटा नुआ क्रिमिनल लॉज और तीनटा पुराना क्रिमिनल लॉज रो सेगुडा प्रैक्टिस करंतु ओके मु जेति कि देछि आपण सरी जाइथिबा आई होप बीएसए रो टोटल सरी जाइछि 170 टा क्वेश्चन ईच क्वेश्चन रो 10 10 टा सेक्शन बीएनएस रो आपनकर 214 की 41 पर्यंत कोन जाइछि ओके से विषय माने 214 माने 2410 टा क्वेश्चन कि ताटू बेसी केना इंटरप्रिटेशन क्लॉज गुडा क्वेश्चन अधिक अछि हला सेगुडा जंते सरी जाइथिबा आपनकर और सेगुडा जंते आपण बुझि जाइथिबे हला ताले कोन होबो ना इजी क्वेश्चन गुडा हमें आराम रे कर परिया काना से क्वेश्चन ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जहा बही आपण रखचंदी एमसीक्यू पई यूनिक हो कि आउ हजार प्रकार रे पब्लिकेशन हेलानी ताको आनंतु जेते सॉल्व कर परिया कथा ग्रुप ग्रुप छोट छोट ग्रुप करके दि जण तीन जण सेटा भलरे प्रिपेयर करंतु एपीपी रो मन रखंतु आपण जदी प्रीलिम्स क्वालिफाई करचंदी मेंस हमें टाइम दवा किछ असुविधा नहीं किंतु प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करे अछि जेतु डायनामिक कट ऑफ आपण 40 50 रखि भाबी देबे कि बहुत रखि देली हबो नहीं सेमती ओके
80-85 ରଖିଲା वाला ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ତ ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ବେଶୀ ଡିଫିକଲ୍ଟ क्वेश्चन ପକେଇବେନି ଫ୍ୟାକ୍ଚୁଆଲ क्वेश्चन पकेबे ତେଣୁ ସେତିକି ସ୍କୋର एक्चुअली रही जाई पारे ओके सो भलरे प्रिपेयर करନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ जेहेतु सब क्लास रे एटा इन्फॉर्म करूची लास्ट ईयर हमर ଗୋଟେ नेगेटिव एक्सपीरियंस हेतला एठी एपीपी परीक्षा रे 10th लेवल रो ओडिया सर्टिफिकेट दरकार 8th लेवल रो ओजेएस रे 8th दरकार ओके एथरे 10th लेवल रो ओडिया सर्टिफिकेट दरकार जो माने 10th रे ओडिया देई नांती इंग्लिश मीडियम की ओडिया इंग्लिश मीडियम पिला माने स्पेशली ताले जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रो 10th लेवल रो परीक्षाटा होची सेटा दे दियंतु जल्दी ओके सो वी विल मीट again tomorrow okay. Thank you all